two sets. Zero comma two, the interval 0,2 in R with usual topology, and 0,1 union 2,3 are these. So call it A, call it B. So A, B are homomorphic or not? A is homeomorphic to B. Let me simplify myself. Okay. So I am drawing three sets. Okay. So you have to tell me which of them are homeomorphic. So A is this line segment. B is and D is. So can you tell me so whether A, B, C, D are they homomorphic, or any two of them are homomorphic, others are not? We have done such kind of things. Hello? Yes, sir. हाँ बताइए भैया, आपको आवाज आ रही होगी मुझे लगता है। Yes, sir, आ रही है। हाँ तो मैंने एक set, okay, say these are sets in R2. So which of them are homomorphic and which are not? अच्छा, कुछ समय पहले ये मैंने आपको लास्ट क्लास में या उससे पहले भी क्लास ये मैं बता चुका हूँ। वहां पर फिगर अलग था, यहाँ अलग है, तो आपको ये बताना बहुत इजी है। Okay, it is an exercise for you. So today we will see another that is called connectedness. In real analysis course, you have seen intermediate value theorem. Okay, can anyone tell me what was intermediate value theorem? Hello? आप लोगों में से किसी को पता इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम?
ये थ्योरम पढ़ी है आपने, हाँ या ना? चुप मत होइए प्लीज, नहीं आता मना Yes, sir. कीजिए, नहीं आता बोले। Sir, if fx is आपको a आता function है तो defined बताए। on an Hello. हाँ if hello sir. हाँ बोलिए बोलिए, एक 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 बार में एक एक बोलिए। कौन बोल रहा था So अभी? this is Arpit सुभाष? Raj. If fx is a हाँ function अर्पित। defined on closed interval a comma b हाँ is such that हाँ first one is fx is uh, fx is differentiable in open interval a comma b, and second one fx is continuous in closed interval a comma b. Then there exists हाँ, c between a to b is such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a. not intermediate value. Whether it's Lagrange or Rolls, I, I think it's Rolls. Whatever you told me Sir, that it is it is Lagrange Rolls theorem. theorem. Okay, I am asking you intermediate value theorem. Hello. हाँ Hello. Other बोलिए if बोलिए। if हाँ f is continuous on a closed interval F, a comma b, okay, F from A B to R is continuous. Good. अगर f a comma b में continuous है और हाँ f of b is not equal to f of b, okay, F of A not equal to F of B. देन f की सारी वैल्यू जो होंगी इन्हें f of a और f of b के बीच में होंगी। हाँ तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये जरूरी Yes. नहीं है कि एफ ए और एफ बी नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन। Yes, sir. Yes, sir. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कांस्टेंट नहीं होगा। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ऐसा हो सकता, सॉरी Yes, देखो sir. Yes. ऐसे फंक्शन तो हो सकते हैं ना हमेशा, तो ऐसा तो हो सकता है ना हमेशा। Yes, sir. ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और तो आपको ऐसे नहीं कहना है, आपको ये कहना है कि f जो है वो कोई भी दो पॉइंट अगर ले रहे हैं आप, हम यहाँ पर f ऑफ a और f ऑफ b लेते हैं, कोई एक पॉइंट r है जो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है, ठीक है? ओके, देन there must exist a point x naught in a comma b such that fx not equal to r. Okay, so this means f takes every value between fa and fb. So here we use uh, a property of this domain. So we will today we will see that property. Okay, we will talk about that property. You must have seen another theorem that is called maximum value theorem. Maximum value theorem. What was that? Maximum value theorem or maximum principle, I think. So this is also almost same. F from A to B to R is continuous. If this is continuous, then F attains its maximum and minimum. Okay? Yes, sir. Ah. At its So extreme point. extreme point theorem or maximum value theorem, whatever you say. Okay? So yeah, extreme value theorem. इसको मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ तो
this means there must exist a point x naught in a comma b such that of x is less than equal to f x naught for all x in comma b. So once you know this theorem for maximum, then it is very easy to prove this for minimum. Okay. So why are we recall? Because this theorem depends on a common property of this interval a comma b. Okay. And this property is called connectedness. Connectedness. Okay. So intuitively, you may imagine two things. So I'm trying to figure. So let me draw this, and this is one figure called it's A, and here is another figure B. Okay. So I have not yet given any definition of connected set or connected space. Can you intuitively tell me which one should be connected, which one should not be connected? So we have two figures, okay? So which one should be connected, which one not? Sir, A is connected while B is not connected. A is connected while B is not connected. So we call B a disconnected set. We call B a disconnected set. So first we define, we give a definition for disconnected set. Okay. So since we are in topological space, okay, so X be a topological space. This space X is said to be disconnected. X is called disconnected, okay. It is possible to find, see here in case of B, it is possible to find two sets, okay. This is one set and this is another set. Both are disjoint, you see, both are non-empty, disjoint, their union is B. Do you see this? In case of B, we have two sets here. Number one is, so I am drawing this. Sir, sorry to Okay, interrupt you, but the screen is paused. Screen is paused. सबके लिए यही हो रहा है क्या? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? सर वॉइस प्रॉब्लम कर रहा है. पॉज नहीं होना चाहिए. वेट अ मिनट. Can you see my screen now? Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. So let me override B. So in B, we have two sets, one in this pink color, another is in green color. Both are non-empty and their union is B. Okay. And if we have such sets, we are saying that B is disconnected. So we will in similar fashion, we will define a disconnected topological space. Okay. Here
there exists two. So whenever we are in topological spaces, we are interested in open sets. Okay? Open subsets of X. Okay. Such that number first, they are non-empty. They must be non-empty. Second, their intersection is empty, means they are disjoint. You see, they are disjoint in B, in case of B. Third, their union is X. Oh, sorry, their union is X. U union V. So whenever I write union, don't be confused, okay? Because you will see U and the sign of union, they are almost same. So please use your brain to understand this thing, okay? To distinguish between U and union. Okay, so we have these three properties, means they, so actually there are four properties. So number one, there are U and V both are open, they are non-empty, they are disjoint, and they cover X. So it means whenever X is U union V, this means U and V cover X. Okay. So this is the definition of a disconnected set, and the pair U and V is said to be separation of X. Okay. U and V is called, so actually this set, this pair is called separation of X. Okay. So the definition of connected is very easy. A topological space is called connected if it is not disconnected. Okay. If X is not disconnected, then X is connected. So any doubt so far? Any doubt? So from your intuition, you give this definition. I think it is very easy to remember these notions now. Okay. So the best thing with topology is you may remember things via your intuitions. Okay. So if uh, you can imagine things, you can give the definition. Okay. So here now we give some example. Okay. Can anyone give me an example of a connected set, connected space? So, okay, here I gave you the definition of a topological space which is connected and which is not connected, means which is disconnected. Okay. So you in similar fashion you may define connected set as well. Okay. So I will give a proper definition. So here, can anyone tell me an example of connected set or connected space? Sir, if we take age equals to open interval 1 comma 2 union 3 comma 4. The open interval 1 comma 2. Yes, sir. Union open interval 1 3 comma 4. Okay. Is this connected or disconnected? Sir, it is disconnected. It Disconnected. is disconnected.
is disconnected. सर फाई सेट ले Why लें this is disconnected? हाँ अगर यदि हम फाई सेट ले लें तो सर हाँ empty set. यस सर Empty set, whether empty set is connected or not. सर कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड है सर ये क्यों कनेक्टेड है? फिर डिस्कनेक्टेड नहीं है सर कनेक्टेड क्यों? डिस्कनेक्टेड नहीं है तो डिस्कनेक्टेड क्यों नहीं है? Okay, because you cannot find two non-empty open sets whose union is an empty set. Okay, यस सर this is vacuously, ऐसे को vacuously कहते हैं. Okay, vacuously connected. जो जिसके लिए आपको ज्यादा आर्गुमेंट नहीं देना पड़े, वो सीधा सीधा हो रहा है, उसको vacuously कहते हैं. Okay, बिकॉज आपको कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, यू और वी तो मिलेगा ही नहीं हमें कभी भी ना. ओके, थर्ड थिंग, इफ आई टेक x इक्वल टू a singleton, okay, and you take any topology here, any topology in x, whether this space is connected or not. Yes, sir, it is connected because we cannot find two disjoint sets. So you have at most you have one non-empty subset of x. Okay, there exists only one non-empty subset of x. Correct. So x has two subsets, empty set and x itself. So non-empty set is only x. Correct. So therefore this is connected. Always connected. Now fourth, let us take x equal to a comma b. Okay, now we have many topologies in x. So let us first take, so okay, tell me one topology on x. Give me one topology on x where x is set a comma b. सर फाई फाई एक्स Phi. ए सिंगल यस सर सिंगलटन भी Okay, this much. भी या ये भी ले सकते. अच्छा चलिए ठीक है, मैं T1 ये एक टोपोलॉजी है, कोई दूसरी टोपोलॉजी दे दीजिए. फाई एक्स सिंगलटन है सिंगलटन भी Phi x singleton a singleton b. Okay, then third वाला. सिंगलटन भी ले लीजिए हाँ, फाई एक्स सिंगलटन भी और phi x singleton b. Okay, अभी इनमें देखते हैं कि कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा डिसकनेक्टेड है. Okay, whether tau 1, so x tau 1 is connected or not? X tau 1 is connected or not? Can you find two non-empty disjoint open sets which covers x? tau 1 वाले केस में अभी नीचे का इनको मत देखिए, नीचे इन्हें मत देखिए, अभी केवल tau 1 पर फोकस करिए. क्या आप x को दो ओपन सेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर ओपन सेट्स नॉन एम्प्टी हो और साथ में डिसजॉइंट हो? ऐसा मिल रहा है आपको? टाउ 1 में ओपन सेट्स कौन कौन से हैं? Sir, tau 1 is connected. टाउ 1 इज कनेक्टेड. गुड. क्यों कनेक्टेड है?
Because we cannot find any two disjoint sets whose disjoint sets are there. Because there are only two non-empty open sets X and singleton A, but they are not disjoint because their intersection is A. Okay, do you see this? Yes, sir. What about tau 2? So disconnected. Disconnected. Why? And there exists two open Kyun? set A and B. So there exist two open sets, non-empty disjoint open set which covers X. So which are those? This set singleton A and singleton B. Correct? Yes, sir. What about tau 3? What about Connected. tau 3? Connected. क्योंकि कोई और है ही नहीं, एक ही है ना? What about tau 4? ये भी कनेक्टेड है सर. ये भी कनेक्टेड है. तो यहाँ से आपने एक बात तो पता करी कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो कौन सी वाली डिस्क्रीट टोपोलॉजी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी कौन सी है यहाँ पर? Tau 2. tau 2. इस वाले केस में तो भैया हमको अगर अगर x की कार्डिनलिटी एक से ज्यादा है तो वो डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है. तो इसका मतलब x में एक से ज्यादा एलिमेंट हैं तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा डिस्कनेक्टेड होगी. सिंगलटन के केस में डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले चाहे इनडिस्क्रीट ले वो हमेशा कनेक्टेड है क्योंकि आपको मालूम है कि भैया इससे ज्यादा सबसेट बन ही नहीं सकते नॉन एम्प्टी सबसेट. ओके, then you also observe that the indiscrete topology, this one is always connected. अब x की जगह आप कोई भी सेट ले लीजिए, आपके पास नॉन एम्प्टी ओपन सेट एक ही मिलेगा जो कि कैपिटल X है. तो इसका मतलब ये ऑलवेज कनेक्टेड. सो व्हाट यू गेट इज indiscrete spaces are always connected. Discrete spaces in case where X has more than one element, then they are disconnected. Okay. So every open interval in R with usual topology, this is connected. Okay, so in fact R is also connected, R with usual topology. We will see the proof of these things. R with the usual topology is connected. Okay, आपको मालूम है R with usual topology connected है. क्या आप ऐसा कोई R में कोई टोपोलॉजी दे सकते हैं जहां पर ये डिस्कनेक्टेड हो जाए? Is there any topology on R where R is not connected? हेलो हाँ बोलिए सर. ये कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड सर एक बार फिर से बताइए सर. आप जब इसकी डिफिनीशन बता रहे थे तो सर हमारे यहाँ वॉइस नहीं आ रही थी और सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे डिसकनेक्टेड हो जा रहा है कैसे कनेक्टेड. आप कौन बोल रहे हैं? सर पंचशील बोल रहे हैं. पंचशील, देखिए मैं इसको अभी आप कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड को इंट्यूटिवली समझिए. मैं इसको लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, आप वहां देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं फिर से वापस चलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा. मैं फिर से एक बार आपको डेफिनेशन दे देता हूँ. दे दीजिए एक बार. हाँ, अगर डिस्कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये इस फिगर को देखिए, ये डिस्कनेक्टेड है तो आपको दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स मिलेंगे जो डिसजॉइंट होंगे. मींस उनका इंटरसेक्शन कोई भी पॉइंट नहीं है और वो उनका यूनियन स्पेस हो जाएगा. ओके, ये तीन चीजें ओपन होगा, सबसेट U और V ओपन होंगे, वो दोनों नॉन एम्प्टी होंगे, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा और वो X को उनका यूनियन
x होगा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम उसे डिस्कनेक्टेड कहते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है इससे, तो हम उसे कनेक्टेड कहते हैं। ओके, ठीक है, इज दिस करेक्ट और सर नॉट? ये हाँ सर ये जो एक बार टाउ टू लिए हैं, जो सर ये हाँ, इनडिस्क्रीट है, क्या ये क्या है? ये जो सर टाउ टाउ टू टू क्या है? ये डिस्क्रीट, कौन सी टोपोलॉजी है ये? हाँ, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो सर एक बार इसको डिफिनीशन से सर प्रूव करके बता दीजिए सर प्लीज। हाँ, आप बताइए डेफिनेशन के हिसाब से ये क्यों डिस्कनेक्टेड होगा, सोचिए थोड़ा। ओके, कोई और बताइए क्यों टाउ टू डिस्कनेक्टेड है? हेलो, Because there exist two open set, singleton A, singleton B, which हाँ, is these are non empty, yes sir, which is okay, not and disjoint sir. they are disjoint and their union is whole of x। Yes sir. ओके, x में केवल दो ही एलिमेंट थे, a कॉमा b, तो इसको आपने लिखा a यूनियन b। ओके, कॉल दिस a u, कॉल दिस b v, और ये यहाँ पर जो डेफिनेशन है वहां पर put कर दीजिए, ये सारी सेटिस्फाई करती है। ओके पंसिल, हेलो, यस सर, ठीक है, यस सर, आ गया समझ में। okay, so let us see why this R is a connected space. So to see R is connected, let us assume that this is not connected. Okay, we will do it via contradiction. Okay, so assume R is not connected. This means this is disconnected. Okay, correct or not? So we will use the method of contradiction. So our claim is to prove that R with usual topology is connected. So we contrarily assume that R is not connected. This means there exist two open sets. Okay, there exist open sets U and V, open set U and V in R. U and V both are non-empty. Okay, U intersection V is empty and R is U union V. Is this correct? Hello? यस सर, Now you say R equal to U union V and U intersection V is empty, U and V both are open. This means V equal to R minus U and U equal to R minus V. Is this correct? Is this correct? Yes sir. Okay. U and V both were open. Okay. U and V both were open. So what can you say from here? So this set is open. So this means R minus U is open. What can you say about U? Close. Complement of U is open. This means It's closed. which is closed? Yes sir. क्या close क्या है? Sir, U close होगा sir. U closed. U is closed. Yes sir. And similarly, from here you see U was open. It was given na U was open, and U is R minus V. This means R minus V is open. So from here, what can you observe? Infer that
B is closed. Okay, so you have now two sets which are open and closed both. Okay, now what you do, you choose 2 points, A from U, B from V. Okay, choose 2 points. You have trichotomy law in R. Do you all know what a trichotomy law is? ये जानते हैं आप ट्राइकोटोमी लॉ क्या होता है? रियल लाइन में ये आपने जब आप बीएससी में पहली बार आए होंगे, वैसे ही आपको बहुत पहले से पता था, बचपन से पता था, लेकिन बीएससी में आने के बाद आपने इसका एक नाम दिया, ट्राइकोटोमी लॉ। ये लॉ कहता है कि कोई भी दो नंबर हो, ए और बी, अगर रियल नंबर है तो 3 चीजें हो सकती है। क्या? या तो ए बी से छोटा होगा, या बी ए और बी बराबर होंगे, या 1 2 3 या ए बी से बड़ा होगा। डू यू नो दिस? ये पढ़ा था आपने बीएससी में? यस सर। सर पढ़े थे सर, लेकिन इस नाम से नहीं जानते थे। अच्छा, इस नाम से नहीं जानते थे, अभी नाम याद रख लो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी. So from this law we may, without loss of generality, we assume that A is less than B. Okay, हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं कि दोनों में से एक जो छोटा है उसको छोटा कर दो, बड़े को बड़ा कर दो, because they cannot be equal. Why? Because U intersection V is empty. They cannot be equal because of this. A cannot be equal to B because U and V are disjoint. Okay? Therefore हमारे पास केवल 2 चॉइस बची, या तो A छोटा होगा या A बड़ा होगा। हम लेके चलते भैया A छोटा है। Okay, is there any doubt so far? Any doubt? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? I am repeating what we have done. We just assume that with, suppose this R is not connected, then by definition there exist open sets U and V which are non-empty, disjoint, and they cover R. Okay, they cover R. Because of this definition that they cover R and they are disjoint, we have V and U both are closed as well. Okay, now what we did, we choose points A from U, point B from V, and we know A and B cannot be equal because U intersection V is empty. Therefore, we assume that A less than B. Now, let us see this thing, A intersection B. U intersection A comma B, the closed interval A comma B. Okay, तो ऐसा कुछ था। R आप जानते हैं ऐसा है। अभी हमें मालूम है कि भाई ये, क्योंकि हम जानते हैं R ऐसा है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, और आपने 2 ओपन सेट लिए, एक ओपन सेट ऐसा कुछ ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, ये दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट A यहाँ लिया, दूसरा पॉइंट B यहाँ लिया, और आप ये देख रहे हैं। Okay, so this was U, this was V. Now you are looking at this intersection. Okay, so इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ करूंगा, क्योंकि U और V, मैं कह रहा हूं U और V का यूनियन R है, तो आपको मालूम है कि हम गलत लेके चल तो कुछ तो गलती आएगी, ठीक। तो लेट अस सी व्हाट वाज दैट गलती। ओके, व्हाट वुड बी दैट गलती। ओके, देखते हैं क्या मिस्टेक आनी चाहिए। सो you know this W is a bounded set. This W is bounded set. Bounded by, bounded below by A, bounded above by B.
Can anyone recall me the least upper bound property or उसको क्या कहते हैं, completeness property of R? Completeness property of R, or sometimes it's called least upper bound property, least upper bound or greatest lower bound property of R. कोई बता सकता है क्या, याद है आपको? Every non-empty bounded above set has a least upper bound. Similarly, every bounded below non-empty set has a least a greatest lower bound. याद है? हेलो, यस सर, यस सर। ये आपने फर्स्ट ईयर, ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पहला चैप्टर जो रियल एनालिसिस का पढ़ा होगा, वहां पर ये होगा लीस्ट अपर Yes, sir. बाउंड प्रॉपर्टी में। एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट हैज अ सुप्रीमम, भी बोलते हैं उसे सुप्रीमम, और लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं। Similarly, every non-empty bounded below set has an infimum or greatest lower bound. Okay, so use this. So from here, since W is bounded above set, it is bounded, therefore it is bounded above. Okay, this means W has a supremum. So W has a supremum. Say sup of W is C. Suppose this is C. Okay, you know this U is closed, this set is also closed. हमने यहाँ पर लिखा था ना, U closed निकला था हमारा, U is closed and this interval is closed. So intersection of two closed set is, in any topological space, intersection of two closed sets is a, complete this sentence please. इंटरसेक्शन ऑफ टू क्लोज सेट क्या होना चाहिए? ओके, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स क्या होता है? हेलो पंसील, अनुराग। यस सर। हाँ, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। पक्का? सर कंफर्म नहीं है, लेकिन गैस इंट्यूटिवली गैस कर रहे हैं सर। अरे कंफर्म क्यों नहीं भैया? अभी तो 14 लोग थे, अभी ये 11 क्यों होगी भाई? आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्या क्लास? प्रीति सिंह, हेलो प्रीति। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, आज के बाद मैं नोट्स देना आपको बंद करता हूँ, क्योंकि क्लास में लोग आ नहीं रहे, तो मैं चाहता हूँ लोग क्लास अटेंड करें। तो नोट्स उन्हीं लोगों को मिलेगा, मीन्स जो क्लास अटेंड करेंगे। ओके, तो मेरे को लगता है ये नोट्स देना बहुत गंदा वो हो जाएगा ऐसे। आप लोग क्लास अटेंड करेंगे नहीं क्योंकि आपके पास नोट्स आ रहे हैं। तो यस सर। मुझे लगता है रियल क्लास टाइम में ही चले तो अच्छा होता, जैसे कि आप लिखते चले जाते और हम लोग भी साथ साथ में आपके लिखते चले जाते सर, स्क्रीन में देख करके रियल टाइम में। ऐसे अच्छा भी होता सर, समझने में पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें समझ में आ जाती। वैसे भी आती हैं सर, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियल टाइम में लिखने में थोड़ा अलग ही वो होता।
हाँ, तो मैं क्योंकि मैं रियल टाइम में लिखवाता हूँ आपको अधिकतर चीजें, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये नोट्स देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लोग क्लास नहीं आ रहे हैं। यस ओके, यस सर। ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। बट यहाँ पर आप मुझे बताइए कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज whether it is closed or not. सुभाष, यस सर। क्या फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या होगा? सर क्लोज होगा सर। फाइनल हाँ, क्यों क्लोज होगा? क्यों क्लोज होगा? ओके, थिंक अबाउट इट। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे मजा नहीं सर आता। अगर हम इनकेस हम दो डिसजॉइंट सेट्स लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई आएगा, और हम जानते हैं कि फाई एक क्लोज्ड सेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सर। लेकिन हमने, और आप और कौन अगर दो, कौन बोल रहे हैं आप? सर मैं कौन बोल अर्पित रहे हैं बोल, आप? अर्पित, यहाँ पर है, यहाँ पर हमने कहाँ पर लिखा कि ये दो डिसजॉइंट है? ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है भाई। नहीं सर मैं अभी अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया सर। मैं बता रहा था कि अच्छा, आपने पूछा है सर कि क्यों क्लोज्ड होगा, तो वो दो केसेस लेकर मैं बता रहा था कि अगर ओके, सपोज सपोज कि अगर वो ए बी है, अगर वो दोनों डिसजॉइंट है तो फिर इंटरसेक्शन फाई आता है, तो फाई क्लोज्ड होता है। और अगर ए हाँ और बी है, उनका इंटरसेक्शन में नॉन इम्पट्टी है, तो ऐसे एलिमेंट आएंगे उसमें जिस जो कि ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे, और ए तो पहले से क्लोज्ड हाँ, हो रखा है और बी भी पहले से क्लोज्ड है, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड ही होगा। तो इस तरीके से फाइनाइट नहीं इंटरसेक्शन ऑफ देख, नहीं नहीं नहीं, आपने ये जो आर्गुमेंट दिया ये ठीक नहीं है। आपको कुछ अच्छा आर्गुमेंट देना चाहिए, मीन्स जो वैलिड हो। ये आपने ये कहा कि वो ए में भी होगा, वो बी में भी होगा, इसलिए क्लोज होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा तो आप किसी भी सेट के लिए कह सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर टोपोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता है, ठीक है? सर अगर टोपोलॉजी इसमें की डेफिनेशन इंटरसेक्शन पता है, नहीं पता लेंगे, है? हाँ, सर इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी इस इंटरसेक्शन का एक पॉइंट एक्स ऑर्बिट्ररी हम चूज करेंगे तो उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिलेगा जो कि उस सेट में एग्जिस्ट करेगा। अरे तो भैया, लोअर बाउंड अपर बाउंड तो हम केवल रियल लाइन, रियल नंबर में कहते हैं। लोअर बाउंड अपर बाउंड केवल रियल लाइन, यस सर, रियल यस सर। नंबर्स के केस में। अगर कोई आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस हो जहां पर हम लोअर अपर की बात ही नहीं कर पाए, जहां पर नंबर एलिमेंट्स एक दूसरे से छोटा बड़ा हम मालूम ही नहीं है, वो ऑर्डरिंग ही नहीं है, वहां पर कैसे करेंगे? यस सर, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? मतलब आपको ये मैं ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये बहुत पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि फाइनाइट इंटरसेक्शन। आप डेफिनेशन देखिए, टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है? टोपोलॉजी की डेफिनेशन बताइए पहले, अर्पित। हेलो अर्पित, व्हाट इज द टोपोलॉजी ऑन अ सेट? Let X be non-empty set, then any subset of X is said to be a topology on X if Any it subset. satisfies. Okay, you said any subset of X is called topology. Is that the statement you made? प्लीज, Sorry मैं sir, I आपसे didn't फिर get से you. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, पढ़ाई करो। पढ़ोगे नहीं तो टोपोलॉजी में बड़ी दिक्कत होगी आपको। आपको केमिस्ट्री में सर है, आपसे बार बार एक्चुअली इसकी सर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पर सर एक्चुअली सर अभी मैंने ये टोपोलॉजी एक्सेप्टेबल नहीं है। पढ़ाई नहीं है सर, बस लिखा है बस। तो फिर चलिए, इसको आप खुद सोचिए क्यों ये दोनों, ये अगर दोनों क्लोज, इंटरसेक्शन क्लोज होगा। थिंक अबाउट इट। ओके, these two are closed, therefore their intersection is closed, so this means W is a closed set. W is closed set, and you know, for a closed set,
supremum will belong to W. C belongs to W. Okay. You also know that W, because this W is contained inside U. Okay, W is contained inside U, and you know U intersection V is empty. This implies W intersection V is empty. Do you see this? So from here, the C will not be equal to B. But if you do the same thing, if you do the same trick that you played here, you play the trick for this set. Okay. This set, call it W1. W1 is bounded below. This is non-empty bounded below set, therefore it has an infimum. So, and what would be the infimum? Find the infimum. So from here, let me give you the answer. So R is B, okay, and the C belongs to U because C belongs to W, correct? And it was supremum. It was supremum. This C was supremum of W, therefore it is supremum of U. Okay, this means this C comma C, this open interval intersection U is empty, and from here what you will get is infimum of W1 is nothing but C, this is small c. Okay, so this implies this C belongs to closure of V R, nothing but V bar. Okay, C belongs to V bar. At this place, you observe that V is a closed set. Is a closed set. So can anyone tell me, if V is closed, what should V bar will be? Okay, what should be V bar? V is a closed set, therefore V bar is same as V. V bar is same as V, because V is a closed set. So from here what you get, C belongs to V. Earlier you were getting that C belongs to W, therefore since W is contained in U, therefore C belongs to U. So you get C belongs to V and C belongs to U. This implies U intersection V is non-empty because there is a element C in their intersection, which is a contradiction. Okay, which is a contradiction to the fact that U and V are disjoint. Therefore, our assumption is wrong, and hence R is a our assumption is wrong. Hence, R with the usual topology is connected. Do you see this? Is this correct for everyone? Is there any doubt? Hello? Okay. हाँ ठीक है ना ये
Yes. Hello. Yes, sir. Okay. So let us recall the definition of a disconnected set. What we say for a disconnected set is we can write X as union of two open sets which are non-empty and their intersection is empty set. Okay, they both are non-empty. They are disjoint. They cover X. So from here, you see U and V both are open, and this U is same as X minus V, and V is same as X minus U. This part is open. This part is open. V is open, and U is open. It is given. So this means the complement of V is open. This implies V is closed. Similarly here, complement of U is open. This implies U is closed. Okay. So this means if U and V form a separation of a topological space, then U and V are both open and closed. Okay. This implies U and V are both open and closed sets. Okay. So here is a result. Here is a result. So you see, whenever you have a disconnected set, whenever you have a disconnected set, you got two. So you always, so in any topological space, X and empty set are both open and closed. You know this. So in any topological space, this is from previous lectures. In any topological space, empty set and X are both open and closed. Is it correct? Is this correct statement? Yes, sir. बोलो भैया. Yes, sir. हाँ. So here what we got is if X is disconnected, we are getting two more sets which are non-empty, both open and closed. Okay. So here is a theorem that you will prove yourself. So a topological space is connected if and only if the only subsets of X that are both open and connected, sorry, that both open and closed in X are the empty set Phi and the whole set X. Okay, so आपको यहाँ से पता चला था कि X अगर डिस्कनेक्टेड है तो आपको एम्प्टी सेट और X के अतिरिक्त दो नॉन एम्प्टी ओपन क्लोज सेट मिले, लेकिन कनेक्टेड वाले केस में आपको जो नॉन एम्प्टी जो भी क्लोज्ड और ओपन सेट होंगे वो केवल दो होंगे, एक तो एम्प्टी सेट, दूसरा X itself. Okay, so I leave its proof to you. Please prove it your own. तो मैंने आपको ऑलमोस्ट प्रूफ आपको दे चुका हूं यहाँ पर. एट दिस प्लेस यू हैव so expand this idea. Okay, prove it your own. So now अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम टोपोलॉजिकल स्पेस को कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड कह रहे हैं. अभी हम देखते हैं सब स्पेस को कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड कैसे देखेंगे. लेकिन दैट इज ऑल्सो इजी because you know what are all open sets in a subspace topology and what are closed set in subspace topology. You know that. So let me give you the definition. A subset
Y of a topological space X is said to be disconnected if so Y with subspace topology tau Y is disconnected. Okay, this is if this sub if 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 Y is disconnected in this subspace topology where tau Y is the subspace topology, or sometimes it is called a relative topology. Okay, relative topology. So I'll end this lecture with this theorem that you will prove your own. And this is very easy theorem. Okay, let Y be a subset of a topological space X, then the following are equivalent. Then the following are equivalent. So whenever we say following are equivalent means one, so it means one implies two, two implies three, three implies again one. It is like this. Okay. So number one, Y is disconnected. So if Y is disconnected, then there exist two open sets U and V of X. Okay, see, here we have Y is subset of X. So this means when Y is disconnected, this means Y tau Y is a disconnected space. Okay, and you know open sets in Y are of the form U intersection Y, where U is open in X. So please recall those things. Okay, such that U intersection Y is a non-empty set, V intersection Y is non-empty set. So if you recall the definition of open set in subspace topology, this is open set in Y, this is open set in Y. Okay, recall these things. U union V is contain U union V contains Y, and U intersection Y intersection V is empty. Okay, so let me give you a hint, small hint. So when you say Y is disconnected, this means you say there exists U1 open, U2 say V1, U1 V1 open in Y, U1 comma V1 open in Y, such that U1 is non-empty, V1 is non-empty. Okay, U1 intersection V1 is empty, and U1 V1 are open in Y. Okay, so this is what you say when space Y is disconnected. So since this Y is a subspace, since Y has a subspace topology, so this U1 is same as an open set in X, open set U in X intersection Y. See, this is that U intersection Y. For this V1, you will get an open set V in X, such that V1 equal to V intersection Y. This is that V. Okay, so U1 is non-empty. So from here you will get this part. From V1 is non-empty, you will get this part. U1 intersection V1 is empty. Okay, from here you will get this part. Since U1 intersection V1 is empty, so this is empty. So U1 is
intersection V intersection Y. This is nothing but U intersection Y intersection V. So this part you get, okay? And this is easy because of this thing. Y equal to union U1 union V1. U1 is U intersection Y. V1 is V intersection Y. Okay, this is nothing but U union I. Here I made a mistake. It is union U union V intersection Y. This clearly implies Y is contained in U union V. Okay, so this is the proof of 1 implies 2. Okay, this is just you are only using definitions of open sets. Okay, so I have given you a proof of 1 implies 2. The third thing is there exist 2 closed sets. So whenever you have closed, this means their complement is open. Okay, 2 closed sets F1 F2 of X such that F1 intersection Y is empty, F2 intersection Y is empty, F1 union F2 contains Y, and F1 intersection F2 intersection Y is empty. So the same thing, okay? So from here, from second you get U and V. So this means X minus U is open, U is open, this means X minus U is closed, V is open, therefore X minus V is closed. So call it F1, call it F2, and work with these 2 sets. You will get the third. Fourth is also easy. What is that? Y equal to B union C, where B and C are non-empty sets such that B intersection C bar is empty, B bar intersection C is empty. Okay, so you see this part is it's very intuitive, because once you say Y is disconnected, this means you have 2 open sets, okay, non-empty open set B union C, and from here what you say where at this place you are saying for disconnected set this U and V both are open and closed. Okay, these are both open and closed. So from you here you will get this B and C are both open and closed, therefore this C bar equal to C and B bar equal to B. Okay, because they are closed. And you know by definition of disconnected thing, this is empty. So this means this is same as B bar intersection C is empty, or B intersection C bar is empty. Okay, so please do it your own. I'll leave at this place. So any doubt? Any question? No, sir, no question. Thank you very much. ओके देन। तो ये आपको देखिए इसमें क्या है, टोपोलॉजी में बहुत इजी सा सब्जेक्ट है टोपोलॉजी, बस आपको थोड़ा इंट्यूटिवली सोचना है। अगर आप उसको सोच पा रहे हैं तो उसको मैथमेटिकली लिखना है फिर। ओके, तो आपको इसमें ये कोई बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी है। अभी आपने देखा डिस्कनेक्टेड का केवल हमने एक फिगर के माध्यम से एक डेफिनेशन दी। अगर आप इंट्यूटिवली सोचिए कि डिस्कनेक्टेड क्या होना चाहिए और उस